So let us have big hands for Akoya Tamada from Kryolan. So are you ready? All guys ready for the next session? Okay, thank you. So shall we begin with the Kryolan session? Over to you, ma'am. Thank you. ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सबने खाना खा लिया है और कोई नींद में नहीं है एटलीस्ट अभी, बिकॉज ऑफकोर्स खाना खाने के बाद सबको नींद आएगी आएगी। सो मैं बस एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एंड देन क्विकली हम मेकअप स्टार्ट कर देंगे। तो ये आई होप आप इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, बट अगेन मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इनका। ये अकोया है। ये बहुत स्पेशलिटी इनकी खासियत इसमें है कि ये बॉडी पेंटिंग, फैंटेसी मेकअप, मीडिया मेकअप, फैशन मेकअप सब करते हैं और ये काफ़ी फ़ोटो शूट्स भी करते हैं। तो अभी अगर आप कल देखे रहोगे तो हमने रोज़ी के साथ मेकअप किया था यहाँ पे, जो आपको ब्राइडल के बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे। एंड आज हम फैंटेसी मेकअप या बॉडी मेकअप आप कैसे करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप देख सकते हो हाफ साइड मेकअप हो चुका है इनका, जो हमने क्रैलॉन के स्टेज पे किया था। एंड रिमेनिंग हाफ वो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे। वो क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या ब्रश यूज कर रहे हैं, सब आपको बता देंगे। सो इन केस किसी को कुछ भी डाउट होगा, किसी को ब्रश नंबर जानना रहेगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, आप बोल सकते हो, हम वहाँ आके आपको बता देंगे। Hi. So I don't know what you said, but hi there, hi guys. So like we said, we already started half of the face, so it's a bit quicker. I've already applied all the prosthetic ears with like a little bit of Prosade, and then I've painted on top with TV paint stick, the same I'm going to use for the base. And then I've blocked the brows with Prosade and eyebrow plastic, which we don't have on the table. But it's literally like a wax. It's a bit firmer and it's easy to block the brows and get rid of any texture on the brows. So now I'm going to cover everything with TV paint stick, which is more like a wax-based foundation. It's quite thick and full coverage, so a little bit goes a long way. And I like to apply it with like a flat brush, so I can push it on top of the eyebrows and get rid of any of the eyebrows, basically. ओके सो इन्होंने मोस्टली जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है वो हमारा टीवी पेंट स्टिक है, और उन्होंने आईब्रोज के लिए पहले प्रोसेट करके हमारा प्रोस्थेटिक मेकअप का एक ग्लू है जो यूज़ किया उन्होंने, और उसके ऊपर हमारा एक वैक्स है, आईब्रो प्लास्टिक नाम है उसका। वो वैक्स से उन्होंने जो आईब्रो हेयर होते हैं ना उनको सटल किया, और जो भी एक्सेस ग्लू था ना उसको निकाल के ट्रांसलूसेंट पाउडर TL1 से सेट किया। सो अब भी वो जो है ना टीवी पेंट स्टिक का TK2 करके एक शेड है जो टर्कोइज कलर का है, वो कलर यूज़ कर रहे हैं उनके आईब्रोज पे और उनके फेस पे। So I'm just doing everything with cream at first, so all the base and everything. I like to do everything with cream, contour, highlight, and then after that I like to powder and come back with eyeshadow to emphasize any of the colors. सो ये टीवी पेंट स्टिक का कलर यूज़ करेंगे और उसके बाद आई शेडो सिमिलर कलर का यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ TL1 जो हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर है वाइट कलर का, उससे मेकअप को फिक्स करेंगे। You can see how full coverage the product is. सो आप देख सकते हैं फाउंडेशन टीवी पेंट स्टिक का कितना फुल कवरेज है। एक ही लेयर में उनका जो फेस का एक्चुअल कलर था वो कलर वाले शेड से हाइड हो चुका है। प्लस ये एक थिक प्रोडक्ट है, विच मीन्स अगर आपने इसको सेट अच्छे से किया तो ये स्वेट बाहर आने नहीं देगा। So I'm going to leave a little bit of that area with nothing on because I'm going to use another TV paint stick in white to use it as a highlight. I like to use the same brush I was using to apply it just because I've got a little bit of leftover and it's blending better the two colors together. And I'm literally just applying it at first, not blending anything. And just to like kind of give the face like a 3D dimension, either having like a flat area. सो ये अभी हमारा टीवी पेंट स्टिक का वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए वो ब्लू मास्टर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहे हैं। फ्लैट ब्रश इसलिए बिकॉज अगर आप ये एरियाज देखोगे तो अंडरनीथ होते हैं, उनको पॉपअप करके दिखाना है। तो जो फैट ब्रश वो यूज़ कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है अगर आपको डिपॉजिट करके ब्लेंड करना है प्रोडक्ट्स का। तो प्लस वो उन्हीं एरियाज़ पे लगा रहे हैं जो एरियाज़ पे उनको हाईलाइट करके दिखाना है।
तो आप जनरली वाइट या हाइलाइटर पीक एरियाज पे यूज करते हो, सेम वही कर रहे हैं वो. And I like, rather than like buffing it, I like to tap it, so I'll keep the product wherever I've put the highlight and it doesn't go everywhere. सो ये जो सेम ब्रश जिससे उन्होंने टर्कोइज कलर यूज किया था वही ब्रश को यूज करके ब्लेंड कर रहे हैं. वो दूसरा ब्रश इसलिए यूज नहीं करेंगे बिकॉज फिर उनको शायद से प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो गया ना तो बैलेंस नहीं होगा दोनों भी साइड. तो बैलेंस करने के लिए जो ब्रश में ऑलरेडी ग्रीन कलर जो पड़ा था उसी से वो ब्लेंड कर रहे हैं ताकि इजी ब्लेंडिंग दिखे. So I'm slightly dusting it off, a little bit of the excess, but not too much, just because I'm going to have another product and I don't want anything to look cakey. But I do need something tacky underneath to grab the shadow later on. सो वो सिर्फ हल्के हाथों से डैप कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट इजीली ब्लेंड हो जाए, ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखे और एक स्मूथ नेचुरल फिनिश आए. And again, using the same brush, but going with like a darker blue to use it as a contour. सो जैसे हम नॉर्मली फाउंडेशन करते हैं हम उनको डार्क कलर से कॉन्टोर करते हैं, सेम ये भी ब्लू फैमिली का कलर लिया है डार्क ब्लू और उससे कॉन्टोर कर रहे हैं. So I like to just put the placement at first and then blend after. तो पहले आप प्लेस कर दो प्रोडक्ट्स को जहाँ जहाँ भी आपको कॉन्टोर चाहिए और उसके बाद आप उनको ब्लेंड कर सकते हो इजीली. And because this TV paint stick, I've got kind of plenty of time to blend. It doesn't set until I actually powder everything. So I can play around with the blending as much as I want. I'm trying not to disturb too much of the brow blocking so it avoids any lifting. And again, I like to take the same brush and kind of buff it in, but by dabbing it. So I'm keeping it in the same space. सो इन्होंने पहले कॉन्टोर को प्लेस किया और स्लोली जो उनका ब्लू टर्कोइज कलर का ब्रश था उसी से ब्लेंड कर रहे हैं. दूसरा ब्रश इसलिए नहीं ले रहे हैं या एक्सेस प्रोडक्ट इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज उनको प्लेसमेंट यहाँ वहाँ नहीं करना है और इजी ब्लेंडिंग दिखाना है ताकि ब्लेंडेबल दिखे, बिल्कुल भी स्टार्क या हार्श लाइन ना दिखे. So TV paint stick is great because it's quite sweat proof. So here obviously it's quite hot and humid. So TV paint stick is going to hold on to the foundation quite well. That half of the face been there for a few hours and it hasn't budged. I haven't even put fixing spray on yet and it hasn't budged at all. So you can see how long lasting it is. सो ये टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रहा है. जैसे मैंने आपको पहले बताया टीवी पेंट स्टिक आप नॉर्मल फाउंडेशंस में भी यूज़ करते हो, इसमें कलर्स भी बहुत सारे आते हैं. तो अगर आप देख रहे हो ये लाइट से बहुत हीट हो रहा है तो जनरली अगर आपने कोई और फाउंडेशन लगाया ना तो शायद वो हीट होके इनके स्वेट से मिलके मूव हो जाएगा जगह से. बट टीवी पेंट स्टिक बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्वेट कंट्रोल करता है और ऑयल को बाहर आने नहीं देता है एक बार आपने अच्छे से सेट कर लिया तो. Once I'm happy with all my creams, I can start setting some area. So I'm going to start to set all the highlight area with like a normal translucent powder and a powder puff. So I've got more control of where I'm putting everything and more pressure. So उनको जहाँ जहाँ भी फाउंडेशन लगाना था डार्क एंड लाइट कलर्स ब्लू फैमिली के उन्होंने लगा दिया है और ये जो भी शेडिंग जैसा भी उनको परफेक्ट फिनिश किया था वो मिल चुका है. तो नेक्स्ट वो हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर TL1 से उसको सेट कर रहे हैं. And I'm putting quite a lot because I kind of want to bake it a little bit. So again, it stays a bit longer. So आपको इसको एज अ बेकिंग यूज करना है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्वेट प्रूफ रहे. I think the triangle powder puff, they are the best one because you can literally have every angle that you want. It's not round, you don't have to flip it or anything. So I feel like it's a good little tools to have. सो पाउडर को सेट करने के लिए हमारा ट्रायंगल स्पॉन्ज यूज़ कर रहे हैं. अगर आप देखोगे एक पीक एरिया है उसमें जो प्रिसाइसली आपके अंडर आई और नोज एरिया जहाँ पे भी पाउडर आपके ब्रशेस नहीं पहुँचा पाते हैं या राउंड वाले पफ नहीं पहुँचा सकते वो ये पहुँचाता है. तो वो लाइटली बेकिंग के तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं. I'm going to leave this to bake a little bit and then for the contour side and all the darker area, I'm going to start using one of my eyeshadow, which is like one of the darker blue. And I'm going to use it to set my foundation. The reason why I like to use this is because the color are a bit more vibrant after. तो अभी ये बेकिंग के लिए जो इन्होंने वाइट पाउडर लगाया है वो उसको वैसे ही थोड़े टाइम के लिए रखेंगे. पर मीन वाइली वो है ना हमारा V6 पैलेट 18 कलर का जो है उसमें से ब्लू फैमिली जो शेड ऑलरेडी उन्होंने टीवी पेंट स्टिक का यूज़ किया था सिमिलर शेड वो आई शेडो का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो अंडरनीथ उन्होंने टीवी पेंट स्टिक का ब्लू कलर लगाया था वो और पॉपअप और एनहांस होके दिखे.
our eyeshadow, they're more like a pure pressed pigment, so they do need something underneath to stick. You can't just put it straight onto skin because it's not going to show. They need something like a cream base or eyeshadow powder, eyeshadow primer. So they do need like a concealer or anything sticky or creamy to get something to adhere on. सो आप अगर अंडरनीथ हमारे आई शेडो के कुछ भी लगाते हो तो एनहेंस ज़्यादा होता है, तो आप या तो टीवी पेन स्टिक या कोई कलर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप है ना हमारा आई शेडो प्राइमर भी यूज़ करके आई मेकअप चालू कर सकते हो या आई बेस की चीज़ें फेस पे चालू कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. I always like to start with like a medium color to kind of contour it, and then once I'm happy, I go with like a deeper color to the very inner corner of the face to give more definition. सो वो बाहर की तरफ लाइट कलर को यूज कर रहे हैं, पर जैसे ही वो अंदर की तरफ कर रहे हैं शेडिंग, वो डार्क ब्लू फैमिली को यूज करके कर रहे हैं. And you have a nice blend of color. Again, this is like more like a stage makeup, so it needs to be seen from far away. You can always go down the ears, again, depending on what costume you're going to have at the end, to kind of blend everything all together. Then once I'm happy, I can dust off any of the excess powder. सो अभी जो भी इन्होंने बेकिंग के लिए पाउडर यूज किया था TL1, उसको रिमूव कर रहे हैं स्लोली स्लोली. So now you've got like a smooth base, and then you can start onto the eyes. सो अगर आप देखेंगे ये हमारी पूरी ब्लू मास्टर ब्रशेस की रेंज को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा ब्लू मास्टर ब्रशेस है वो सिंथेटिक रेंज की ब्रशेस है, जो आपके मेकअप को जनरली इधर वो पाउडर हो या फाउंडेशन या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके अपने अंदर नहीं रखती है. तो सारे ब्रशेस जो भी अकोया आज यूज़ कर रहे हैं सब ब्लू मास्टर फैमिली से है. So I'm going to start with using like a hot pink shadow to kind of map it where I want my eyeshadow to go. And again, I'm not buffing it in. I like to dab it so I've got more intensity of color. Because if I was buffing it, it would kind of disappear. So you really don't want to press the powder so you've got more intensity onto the eyeshadow. ओके. सो कभी भी अगर आप आई मेकअप करते हो ना, तो जनरली आई शेडो के ऊपर हम लोग दूसरे आई शेडो को ड्रैग नहीं करते, हम डिपॉजिट करते हैं. सेम वे अगर आप आई मेकअप या कभी भी फेस पेंटिंग या बॉडी पेंटिंग करते हो तो मेक श्योर करो कि आप आई शेडो को डैप करो, ड्रैग नहीं, बिकॉज उससे फॉल आउट्स बहुत होंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा ही नीचे रहेगा और होल्ड करके नहीं रखेगा काफ़ी टाइम तक. I always like to start with like a lighter color rather than like a dark, because if I start with something dark and I mess up, I can't go back and fix it. So always start with like a lighter and then kind of build up your color to a darker one. सो जब भी आप फेस पेंटिंग करते हो तो इनिशियली डार्क कलर्स के साथ मत जाओ, बिकॉज कभी भी कुछ भी मिस्टेक हुआ तो करेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसीलिए वो थोड़े थोड़े एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं. एक बार अगर आपने लाइट कलर यूज़ करके बिल्ड कर लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहीं पे आपको बिल्ड करना है, तो आप 2-3 लेयर और आई शेडो की डिपॉजिट कर सकते हो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए. So I like to ask my model to open and close the eyes so I can see where my placement is, because sometimes when you do all your eyeshadows with the eyes closed, once I open everything, like your makeup disappears, so you don't know what you've done. So it's always nice to ask them to open and close their eyes, just so you know where the placement is going. अगर आपको प्लेसमेंट बराबर करना रहेगा तो आप है ना मॉडल को बोलो आईज ओपन और कंप्लीटली ओपन करके आई मीन क्लोज करके नहीं रखने बोलो. आस्क देम टू आंख ओपन भी करे एंड क्लोज भी करे ताकि आपको बेटर प्लेसमेंट समझ आए. Once I'm kind of happy with that first layer, I can start adding more deeper color, and I'm going to go back with my palette here, and then I'm just going to use like my purples and my blues just to soften it and then make it a bit more deeper in each corner. So I always like to use like a round brush, if I can find one. Yeah, I'll use that after. I'll use that one. So yeah, I always like to kind of double deep and play around with my colors, dust off the excess, and again, press it. सो अगर आप देखोगे इन्होंने आई शेडो जो यूज़ किया था पहले V2 पैलेट से, फिर ये थोड़ा एक हॉट पिंक कलर उन्होंने यूज़ किया था जो सेपरेटली आपको मिलता है.
तो ये कलर जो था थोड़ा वाइब्रेंट था, जस्ट टू गिव इट थोड़ा स्मोकी इफेक्ट और थोड़ा सटल। वो अगेन एक वॉयलेट और पर्पल फैमिली को यूज कर रहे हैं ट्रांजिशन कलर देने के लिए। And again, don't worry too much about this area because you're going to clean it after. You kind of want to get all your layers first, and then you come up later and then you clean. And again, I try to like press the powder rather than swiping it too much. सो एक बार अगर आपने प्लेसमेंट प्रोडक्ट का कर दिया है तो जो भी आई शेडो आप यूज करोगे डिपॉजिट करो, ड्रैगिंग ज़्यादा नहीं करना है, जितना हो सके उतना डैब डैब करोगे तो बेटर फिनिश आएगा आपको। I kind of swatch, like change brushes depending on what color I'm using, just because I don't want to have too much colors, like mixing it up together and having like a brownish color. So it's always important to have different brushes for your different colors when it comes to shadows. सो जब आप आई शेडो करते हो, अगर आप सिमिलर फैमिली को यूज़ करते हो तो आप सेम ब्रश यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने जैसे अभी इन्होंने पर्पल फैमिली यूज़ किया था पूरा, तो उन्होंने पिंक पर्पल के लिए सेम ब्रश यूज़ किया था। बट अभी अगर आप देखोगे तो वो येलो कलर यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर करो जब आप दूसरी फैमिली के साथ मेकअप करते हो तो ब्रशेस चेंज कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। What's great with this palette is because you've got all your bright colors, they all goes kind of nicely together, so you know which color goes with what. So when I'm kind of creating the look, I know that those colors goes well. So it's quite like nice if you're not really sure with color theory. सो आप हमारा ये V2 पैलेट देखोगे ना, तो हमने सारे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ना साथ में रखे, ताकि आपको समझ में आए कि अगर ये कलर आप यूज़ कर रहे हो तो इसके बाद कौन सा कलर यूज़ करोगे जो कॉम्प्लीमेंट करेगा। जनरली आप अगर देखने जाओगे तो काफ़ी पैलेट्स में सिमिलर कलर्स आजू बाजू नहीं होते, थोड़े दूर दूर पे होते हैं, जिसकी वजह से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा कलर ये कलर के बाजू में ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। बट अगर आप हमारा ये पैलेट देखोगे तो जो भी कलर एक दूसरे के बाजू में है सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ग्रीन से लेके ब्लू, एंड देन नीचे अगर आप देखोगे पर्पल फैमिली, देन येलो एंड ऑरेंज। ये सारे ऐसे कलर्स हैं जो आप एक दूसरे के बाजू में प्लेस करोगे ना तो ऑलवेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। I always like to use only matte shadow, especially if I've done the brow blocking, because if you use anything with shimmer, it's just going to highlight the fact that you've got texture. So when you try to like hide something, always use matte colors. And then I'm going with my deep black eyeshadow, which is one of my favorite shadow, and then again emphasize each of the inner corner of the eyes. But this is my last step. I'm not adding more colors after that. सो जब भी हम शेडिंग करते हैं तो हम डार्क कलर ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो अगर आप देखोगे इन्होंने सिंगल कलर डीप ब्लैक यूज़ किया है शेडिंग के लिए। Then look up for me. And I'm going slightly under the eyes too. But I'll take care of this part after. I just kind of want to build up the first layer. And again, just emphasize it a bit more so I've got a nice little smoky effect. सो आप देखोगे इन्होंने पहले फ्लफी ब्रशेस यूज़ किए थे जहाँ पे भी इनको स्मोकी इफेक्ट चाहिए था, और जहाँ पे भी इनको ब्लेंडिंग और इजी डेप्थ लुक देना है वहाँ पे ये थोड़ा स्टिफ ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं। Going back with my pink color and just smoke out the bottom of the lash. Look up for me. Again, just to tie up the look all together so it doesn't look too heavy on top with nothing underneath. Look up. सो जो कलर उन्होंने ऊपर यूज़ किया था पर्पल फैमिली, सेम वो अंडर लोअर लिड यूज़ कर रहे हैं। I might go back after to kind of like switch up a little bit of the colors, but my first layers is quite nice, so I'm going to start by cutting the crease with another product called Hazy Cream Liner, which is more like your silicone-based product. You can use it as eyeliner, you can use it as eyeshadow base, you can use it in your waterline on the lips. It's quite like a multi-purpose product. I'm going to use it to cut the crease, and because it's silicone based, it's going to self-set, so I don't need to powder it on top or anything like this. सो इन्होंने जो भी आई मेकअप वो साइड पे किया है, सिमिलर ये साइड पे हो गया है। तो नेक्स्ट ये हमारा जो आई लिड है उसको कट क्रीज का इफेक्ट देने के लिए HD क्रीम लाइनर यूज़ कर रहे हैं। HD क्रीम लाइनर एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है जो आप आई लाइनर, काजल, मस्कारा, फैशन मेकअप बेस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट है। मैंडेटरी नहीं है कि इसके ऊपर आपको आई शेडो डिपॉजिट करना पड़े।
So you've got a few like second before it kind of set by itself. So you either want to have a sharp line or you can have like something a bit more blended. But you have to be mindful that at some point it's going to set by itself and you won't be able to buff it. सो ये सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट है, इसलिए अगर आपको क्रीज इफेक्ट, कट क्रीज इफेक्ट देना है तो आप शार्प लुक कर सकते हो. अगर आपको स्मोकी इफेक्ट देना है तो तुरंत ब्लेंड करो, बिकॉज ये सेल्फ सेटिंग है. एक बार ड्राई हो गया तो थोड़ा ब्लेंड करने के लिए हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए. Once I'm happy with this, I can start putting a little bit more color again to like match it up and not have just like a pure white line. And then close your eyes. सो वो जो वाइट, जहाँ पे भी इन्होंने वाइट यूज किया है, जस्ट उसको ब्लेंड करने के लिए जो सिमिलर कलर उन्होंने यूज किया था, हॉट पिंक कलर, वो यूज कर रहे हैं. The snow one is one of my favorite because if you want to have any pop of color, this as an eyeshadow base gonna make your colors like pop even more. सो उनको स्लाइट इफेक्ट दिखाना था तो उन्होंने आई शेडो डायरेक्ट डाल दिया है. अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेड या ज़्यादा पॉपअप करा के प्रोडक्ट्स दिखाना है तो अंडरनीथ सिमिलर कलर यूज करके अगर ऊपर आप आई शेडो डालते हो तो ज़्यादा पॉपअप होके वाइब्रेंट फिनिश देता है. So again, just kind of playing between my pink and my yellows until it's kind of like merging it. And then I'll add a little bit of like sparkle so it's not completely matte. So I'm just going to use a product called Glamour Spark. This one is, I think it's aqua. No, it's blue spark. So it's just like a blue sparkle. We have them in a few different colors. But it's just to add like a tiny bit of shimmer without having glitter or like chunky glitter, because sometimes it can look a bit tacky. So I'm just adding a little bit onto the very inner corner and then I'm just going to press it with a flat brush. सो नेक्स्ट इन्होंने जो प्रोडक्ट यूज किया है वो हमारा ग्लैमर स्पार्क है. आप देखोगे तो पूरा मेकअप ब्लू फैमिली के साथ किया है इन्होंने. तो इन्होंने जो ग्लैमर स्पार्क है ना, उसमें एक्वा स्पार्क करके एक है, वो यूज कर रहे हैं ताकि एक ब्लू इफेक्ट उनको आई बेस पे मिले. ये हमारा जो शिमर जैसा इफेक्ट देगा आपको, पर कंप्लीटली नहीं, थोड़े थोड़े प्लेसेस पे आपको शिमर इफेक्ट देगा जो बहुत रियल लगता है अगर आप कैमराज में काम करते हो तो. So now I'm going to start doing my liner, and for this I'm going to use my aqua color palette, which is more like your water-based product. People like to use it for face painting, body paint, but I do like to use it as a graphic liner just because it's a bit more softer than a cream liner. Sometimes with the cream liner, like the line isn't as smooth, where this one is great. You can activate it with water. However, I like to use it with like a cake eyeliner sealer, which is going to make it water resistant. सो अभी नेक्स्ट वो हमारा एक्वा पैलेट यूज कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो एक्वा पैलेट 6 कलर 12 कलर में आता है, बट जो पैलेट वो यूज कर रहे हैं वो 18 कलर पैलेट है. तो एक्वा पैलेट आप वाटर से एक्टिवेट कर सकते हो. आपको वाटर लेके उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, बट अगर आपको उसको रेजिस्टेंट बनाना है तो आप केक आईलाइनर सीलर यूज करके भी कर सकते हो. And you want to make sure that you've got a nice paste. That's when you know it's ready to use. सो वो लाइनर लगाने के लिए टोरे ब्रशेस यूज कर रहे हैं. हमारे टोरे ब्रशेस बेसिकली हमारे सिंथेटिक ब्रश है. तो सिंथेटिक ब्रशेस क्या करते हैं, अगर आप उनको जिस भी एरिया में मूव करते हो वो उसी एरिया में मूव होते हैं, वो यहाँ वहाँ नहीं जाते. तो जब भी आप कुछ प्रिसाइज लाइनर या पेंटिंग्स या कुछ भी ड्रॉ करते हो तो आप हमेशा टोरे ब्रशेस प्रिफर कर सकते हो. So I'm doing like more like a graphic line, because I don't want to close the eyes completely, and I thought it was a bit more interesting. And again, I like to have like one of those tiny face painting brush as a liner. Open your eyes. Yeah. 4303. 4303. And then open your eyes and then look up for me. And again, I'm going to use the same product in the same brush, and I'm going to start adding details onto my look. अगर आपको किसी भी ब्रश का नंबर जानना है तो आप ऐसे हाथ उठा सकते हो. अगर मैं वहाँ पे आ सकती हूँ तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी. सो सेम ब्रशेस से वो एक लाइन इफेक्ट दे रहे हैं, और सेम हमारा एक्वा ब्लैक यूज कर रहे हैं केक आईलाइनर के साथ. So sometimes I feel like the inner corner can be quite tricky when you have a brush.
So always ask your model to look the opposite way. So if you're going to do the inner corner there, ask your model to look this way. And then if you're going to do that inner corner, ask your model to look the other way. So it kind of lifts naturally the eyes. सो इन्होंने बहुत अच्छा टिप्स बताया है अगर आप फेस पेंटिंग करते हो, अगर आप ब्राइडल भी करते हो ना कभी भी और आप लाइनर लगा रहे हो, तो अगर आपकी मॉडल के लेफ्ट साइड पे आप अगर कोई भी मेकअप कर रहे हो ना, तो उनको लेफ्ट साइड देखने बोलो, तो उनकी आईज अगर वहाँ जाएगी ना तो आपको बेटर एरिया समझ आएगा ड्राइंग करने के लिए या काजल लगाने के लिए. और अगर आप राइट साइड बोल रहे हो तो उनको बोलो राइट साइड के कॉर्नर में देखने के लिए. तो आपका अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो ना, तो आप अगर विंग लाइनर भी लगा रहे हो या पिकॉक लाइनर भी लगा रहे हो ना, तो इजीली आपको एरिया मिल जाता है उसको ड्रॉ करने के लिए. So I'm just finishing details with my black lines. And then I'm going to go back onto my cream liner again with a small brush. And I'm going to highlight some area again to give that more 3D dimension onto the look. So जहाँ पे भी उन्होंने ब्लैक यूज़ किया उसी साइड पे वो वाइट यूज़ करेंगे सेम एक्वा कलर से और उसको एक पॉप-अप इफेक्ट दिखाएंगे. And I'm just going to go out again. Sometimes just by doing a white line on the outer corner kind of lift everything and it also cleans the edge. Look up for me. So for the eyes, it's pretty much done. I might add a little bit of colors here and there as a touch up. Then look up. So sometimes you don't know how low you need to, sometimes you don't know how low you need to put your eyeshadow until you actually add all those details. So उन्होंने पहले एक लाइन ड्रॉ किया, उसको वाइट कलर से हाईलाइट किया. अब जो भी बीच का वाइट एंड ब्लैक के बीच के एरियाज है उन पे जो हॉट पिंक कलर ऊपर यूज़ किया था सेम कलर यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको बेटर शेडिंग समझ में आए. Again, just dabbing the colors. And then I'll add a little bit of the yellow. जैसे ऊपर पिंक के पर्पल किया था सेम फॉलो वो नीचे भी कर रहे हैं. Almost done. Right, so now that I'm happy with this, I'm going to start adding more details. You could finish the look like this if you wanted to, but I'm just going to add some lines to make it a bit more intricate. And again, I'm going back onto my aqua color, but, oh, you've already put it in yellow. Yes, sorry. Oh, I'll be quick. So again, mixing it until it's a nice little paste, loading the brush, and then you're holding your breath now, and you're trying to match the other side. Sorry? Yeah, of course, yeah. So again, I'm going to try not to block everyone. But you want to kind of match the other side. Just going to turn you. Sometimes when you do one side and you have to copy the other one, it gets a bit trickier. But we're going to try our best to make the same. So उन्होंने सेम केक आईलाइनर पैलेट से येलो कलर यूज़ किया है. तो अगर आप देखोगे पहले उन्होंने हल्के हाथों से ड्रॉ किया और उसके बाद उसको सेकेंड लेयर देके इंटेंसिटी बढ़ाया है. अगर फर्स्ट लेयर में आपने कुछ मिस्टेक किया तो आप क्लीन कर सकते हो, बट इनिशियली अगर आपने उसको डार्क कर दिया ना तो सिमिलर नहीं दिखने की वजह से आपका मेकअप इवन नहीं दिखेगा. So kind of do it step by step because sometimes it's a bit tricky to match up the other side once you've started one. So I'm going to try my best to match it up.
But I think adding some lines sometimes it just adds details to the look, and it's not just one plain foundation. I'll do the same on the other side. And because, again, it's water-based product, it's self-set, so I don't need to set with anything on top of it. It should stay by itself. This one's been there for a few hours and it hasn't cracked or anything. I haven't even put any fixing spray yet. सो पहले इन्होंने ड्रॉ किया सिमिलर आपको जो वो साइड पे अगर दिख रहा है आपको तो जो उन्होंने वो साइड पे ड्रॉ किया है सेम उन्होंने ये साइड पे भी ड्रॉ किया है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट आप मेक श्योर करो कि जब कोई देख रहा है तो वो इवन दिखे अगर आप देखने जाओगे तो जो राइट साइड था ना वो उन्होंने ऑलमोस्ट 3.5 आवर पहले किया था विदाउट सेटिंग फिक्सिंग स्प्रे यूज नहीं किया है उन्होंने स्टिल आपको दिख रहा है वो ऐसा फेडेड या मूव नहीं हुआ है प्लेस से सो अभी सब होने के बाद वो एक बार फिक्सिंग स्प्रे भी यूज करेंगे Oh yeah. Right, so now that I've got this, again, could leave it like this, but sometimes it's nice to add details and shadowing, again, to give that 3D effect and to look like you took care of the makeup and you took a bit longer. So I'm just having the smallest brush from the Blue Master, and I'm going to use one of the darker colors and just shadows some area. You don't want to shadow everything, you just want to shadow some area of it. सो ये डार्क कलर्स जो पैलेट्स के थे ना ब्लू जैसे वहाँ पे देखोगे ना उन्होंने शेडिंग किया है सेम शेडिंग वो यहाँ पे करेंगे ताकि एक डेप्थ और इवन फिनिश दिखे आपको तो केक आईलाइनर सीलर यूज़ करने के बाद आपको है ना ड्रॉ करने के बाद मैंडेटरी नहीं होता है कि आप सिमिलर कलर वहाँ पे आई शेडो का डिपॉजिट करें वो सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट खुद ही स्टे करेगा आपके फेस पे You just make the lines pop a bit more. सो वो डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं लाइन जो कॉर्नर्स एरिया पे अगर आप देख रहे हो और उसके लिए प्रिसाइज ब्रश अगेन यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी इजी ब्लेंडिंग हो और स्मूथ दिखे Ideally, when you do like a fancy look, if you can have a face shot or anything like this, so you can practice before or have some kind of mood board to practice and have ideas. And I like to go between like the small brush and like a more buffy, like a bigger brush to buff the harsh lines. सो आप अप्लाई एक थिन ब्रश से करो ताकि आपका ब्रश अगर फ्लफी यूज़ करोगे तो यहाँ वहाँ आई शेडो मूव हो गया तो अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा तो उन्होंने एप्लीकेशन के लिए थोड़ा पतला ब्रश यूज़ किया है पर ब्लेंडिंग के लिए वो जो हमारा जनरली जो आई शेडो ब्लेंडिंग थोड़ा थिक और फ्लैट होता है वो यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग के लिए फ्लफी Just trying to match up a little bit of the other side because it's been there for a little while. So at this point, it's almost finishing touches. You just want to add details to the look. A little bit of nose contour so the nose doesn't get lost. सेम शेड वो नोज के लिए आईब्रोज के ऊपर और फोरहेड पे भी यूज़ करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर कॉन्टोर शेडिंग इफेक्ट दिख जाए Just want to go back and forth between like the darkest color and like more like a medium color again to give that like 3D element to your makeup. Right, once you're done with that part, now it's almost finishing touches. I'm just going to add some beads again to have like a 3D element. It's not just completely flat with makeup, it's making it a bit more interesting.
And I'm going to use a lash glue and then some beads that already have a stick on, but because you've got so much going on, sometimes you need a little bit of something underneath. Oh, cheers. Tweezer. Right. So the lash I'm using, they are one of the newest lashes. I don't think they come out yet in India, but they will eventually. But I just wanted to like try them out because this is the first time I've seen them, and they're really nice to have. Again, ideally you probably want to cut it too much like the eyes, but time-wise will be quick. Yes, I'm just gonna, so now that it's finished, you want to put some fixing spray. Don't put any fixing spray unless you want to do touch-up. This is why I haven't put this size yet, because I wasn't sure if I was going to match it up a bit more. But now that I'm happy and I'm done, I'm going to literally put everything. So close your eyes, hold your breath. सो आफ्टर शेडिंग ये सब जो भी उन्होंने हाफ साइड पहले किया था, पर उन्होंने फिक्सिंग स्प्रे से उसको फिक्स नहीं किया था, बट अब उनका दोनों साइड हो गया लैश और ये सब यूज़ करके, तो अब वो फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं. फिक्सिंग स्प्रे ना आपको थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट देता है, तो आप देखोगे टीवी पेंट स्टिक आपको मैट फिनिश देता है, फिर आप उसके ऊपर आपने एक्वा कलर यूज़ किया जो अगेन मैट फिनिश देता है. सारे आई शेडोज वगैरह जो भी इन्होंने यूज़ किया था सारे मैट फिनिश देते हैं, तो थोड़ा वो जो नेचुरल शाइन है ना वो आने के लिए उन्होंने क्रायोलन का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया. I'm just going to put slightly, a little bit, final touches, cream liners to merge the lash with her natural lashes. So आप देखोगे जनरली आप फॉल्स लैशेस और रियल लैशेस को मस्कारा से टॉप अप करते हो और उनको स्टिक करते हो सो दैट वो नेचुरल दिखे, बट यहाँ पे ये सेम सुप्रा कलर यूज़ कर रहे हैं और उसको लाइनर और फॉल्स लैश और रियल लैश के बीच में यूज़ करके स्टिक कर रहे हैं ताकि रियल इफेक्ट दिखे, फेक नहीं दिखे. बिकॉज कभी कभी दूर से वो नहीं दिखता है, बट अगर आप कैमरास वगैरह में पिक्चर लेते हो या कोई आपको सामने से देख रहा है तो वो तुरंत देख लेता है कि फॉल्स लैशेस और रियल लैशेस विजिबल है. Look down. Right, open your eyes. I just need a bit of glue. Sometimes when it gets hot like this, the glue sets a bit too quickly. So I just need to put a little bit onto the inner corner. And then we'll be done. So make sure that the glue is always a bit tacky before you apply it. And then look down, but keep your eyes open. There, that's better. Yeah, all good. Right, that's pretty much done for the look. Obviously, you gotta keep going and doing everything else, but we're gonna stop for today. Yeah. Sorry? Okay. Okay. Yeah. Oh. Yeah. ओके, सो मॉडल थोड़ा अकोया के साथ आगे चल के आएंगे तो आप लोग एटलीस्ट क्लियर पिक्चर देख सकते हो कि इन दी एंड फिनिश कैसा है. सो सर कैन यू Yeah, even you can ask questions. If any queries, doubts you all have, you can ask. Oh, we will. Too close. तो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए हमारा अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में या अगर आपको और भी क्रायोलन के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो हमारा बूथ नंबर 504 है, आप जाके चेक कर सकते हो. प्लस वहाँ पे गुडी बैग्स मिल रहे हैं एंड 15 to 20% ऑफ चल रहे हैं प्रोडक्ट्स पे.
तो बूथ नंबर 504 है क्रायलॉन का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को एंड फॉर गुडी बैग्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you, guys. I hope it was helpful and enjoyable.